जय भीम। सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन करते हुए संविधान फाउंडेशन नागपुर की ओर से मैं नेहा खोब्रागडे आप सबका आज की संविधान पाठशाला की 29वीं कक्षा में स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह हम इस कक्षा की शुरुआत भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पढ़ने से करेंगे। इसके लिए मैं संविधान फाउंडेशन की युवा टीम से प्रीतिश निरंजन को आमंत्रित करती हूँ। प्रीतिश। Jai Bhim. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1945, do hereby adopt, enact, and to give ourselves this Constitution. धन्यवाद. थैंक यू प्रीतिश। आज की कक्षा के लिए हमारे साथ माननीय अनिल प्रथम सर है। सर आईपीएस है और फिलहाल गुजरात में सीआईडी क्राइम में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पद पर कार्यरत है। आज की कक्षा का विषय है समाज में संविधान जागृति क्यों जरूरी है। सर, संविधान पाठशाला की 29वीं कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संविधान फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री इजेड खोब्रागडे सर, आपका भी मैं आज के कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के विषय पर चर्चा के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं संविधान फाउंडेशन के बारे में संक्षेप में वर्णन करना चाहूंगी। संविधान फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक मूल्यों, सिद्धांतों और तत्वदान का संदेश देना और उनमें एक संवैधानिक संस्कृति को आत्मसात और विकसित कराना है। हम संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके इस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। संविधान फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री इजेड खोब्रागडे सर जब नागपुर जिला परिषद के सीईओ थे, तब उन्होंने अपने अधिकार के तहत स्कूलों में प्रतिदिन प्रस्तावना पढ़कर संविधान ओळख अभियान शुरू किया था। यह एक तरह का एक अभिनव उपक्रम था। हर सुबह बच्चे संविधान की प्रस्तावना पढ़ने लगे, जिसके माध्यम से संविधान सभी के घर पहुंचा। 26 नवंबर 2005 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। संविधान फाउंडेशन ने स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉलो अप किया। नतीजतन पहले 2008 से महाराष्ट्र राज्य सरकार और फिर 2015 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रव्यापी बनाया। अब हर साल 26 नवंबर को संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान फाउंडेशन की स्थापना 2012 में श्री इजेड खोब्रागडे सर द्वारा संविधान ओळख अभियान को आगे बढ़ाने और समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए की गई थी। हम संविधान और इसकी मुख्य विशेषताओं जैसे विषयों पर कार्यशाला, सेमिनार, विधान विज्ञान माला, सम्मेलन, परिषद आदि का आयोजन करते रहते हैं। साथ ही भारतीय संविधान से संबंधित सभी विषयों पर निरपेक्ष चर्चा हेतु संविधान की पाठशाला का आयोजन शुरू किया। संविधान जागरूकता के लिए हमारी छोटी सी कोशिश है। आज संविधान फाउंडेशन द्वारा संचालित संविधान की पाठशाला की 29वीं कक्षा है। मैं एक बार फिर से इस कक्षा के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। Now I will give a brief introduction about today's guest. आज की संविधान पाठशाला में हमारे अतिथि है अनिल प्रथम सर। सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन बिहाफ ऑफ संविधान फाउंडेशन। अनिल प्रथम सर 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है। उन्होंने पुलिस विभाग के विभिन्न प्रभागों में कार्य किया है एंड ही इज प्रेजेंटली पोस्टेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन सीआईडी क्राइम इन गुजरात स्टेट. Sir has worked as SP at various locations like Bhuj, Banaskantha, Panchmahal, Bhavnagar, Mehsana, and Gandhinagar. Sir has also worked as DCP in Baroda and Ahmedabad. Sir also has experience as a commandant in CISF at Baroda, Gujarat, and Singareni, Andhra Pradesh. He headed Police Training Center at Junagadh and also worked as DIG in Economic Offence Wing. Sir had multiple stints at CID, right from SP to IGP to additional DGP in Women's Cell and Crime. Before joining police services as IPS officer, Sir has also worked as officer with Hindustan Petroleum Corporation Limited, Unit Trust of India, and LIC of India. Sir has been constantly associated with many social and welfare activities.
He has been associated with Sankalp Bhumi Trust, Vadodara, which propagates philosophy of Dr. Babasaheb Ambedkar, Hindustan Scouts and Guides Association for creating culture of humanity service, Sangha Kaya Foundation for spreading Buddha's Dhamma, Achievers Foundation for Socio-Economic Empowerment, and National Human Empowerment Society. This is the second time Sir has been associated with Savidhan Foundation. Earlier, it was our great pleasure to have you on our Savidhan Sahitya Sammelan, which was held in Nagpur on 8th and 9th June 2019. Sir has come all the way from Gujarat uh, to attend as a guest. Sir, once again, I welcome today for the today's school and request you to speak on today's topic. So please. Thank you very much for my introduction. Welcome, First sir. of all, I will thank Shri Cobra Ganeji for doing such a wonderful job since many years, especially when he was in service. Constitution awareness is the main thing, is the main service which we can impart to the general public. As today's topic is that community should be aware of the constitutional values and it is a necessity. So my topic has been actively propagated by Yuva Savidhan Foundation. I am really thankful for that. In this context, I would like to say about Sankalp Bhumi, which Neha had just briefed you about that thing. That Sankalp Bhumi is associated with the thoughts and the ideas which Dr. Babasaheb Ambedkar must have imbibed in his mind when he was thrown out of the office of the Maharaja Sayajirao, when in spite of all the education, he was not allowed to serve in the administration. So the Sankalp Bhumi thinks that the constitution which was framed later on by Dr. Babasaheb Ambedkar, the ideas, the seeds were born at that time. It was about 4 to 5 hours where he sat under a tree and thought, okay, what should be the rules and regulation, what should be the system to govern the Indians, to govern the underprivileged, which form the majority of the people. So first, I would link Vadodara Sankalp Bhumi place as the constitutional capital, and after this constitution was drafted, it was implemented, and finally we see constitutional foundation by Mr. Khobragade and others that they are doing it, they are propagating, and with their consistent approach, their consistent follow-up, a government of India also started celebrating the Constitutional Day since last 5-6 years. And as you are aware that in the year 2019, Government of India had planned a big campaign from 26 November 2019 to 14th April of 2020. So it was planned in a big way. It was planned in a phased way, and it was intended that all the state governments, all the central government departments, all the other stakeholders will participate in that. And it was somehow partly it was successful because after that Corona came. So I think it was not implemented in the way the government wanted.
But the one thing is clear now that officially government want that constitutional values, constitutional provisions should be known to each citizen of India. So it is our duty that we treat our constitution as national holy book, which should be followed by all the religion, all the sects, and all the people. Only then we can think of what framers of the constitution thought while drafting the constitution. So with these few starting points, I think how we should get it implemented is the next point. So in my way, I think that it is not one department's work, it is not one NGO or individual's work. It needs involvement of the large stakeholders of the public. मैं इस चीज को थोड़ा सा इस तरह से भी कहना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेंड्स होने चाहिए. There should be friends of the constitution in different areas, in different sectors. For example, advocates, engineers, doctors, RTI activists, other social activists, leading women activists, child activists. So they are the people who help in a real ground level that how constitution is being implemented, how constitution is being violated. So with their feedback, we in administration, in any department, we can work easily and we can achieve our objectives easily. Because when we are sitting in our offices, many things may not reach to us. But if we have liaison with these type of peoples, if we have liaison and coordination with such type of friends of the constitution, I think our work get easy and we are able to do justice to our constitutional job, constitutional work. As we all are aware that as a minister, as an officer, as a constitutional authority, whenever we take charge, we swear by the constitution that we will follow the constitution. We will ensure the constitution. We will ensure that it is not violated, it is not abused. So it is our duty that we make efforts, we make extra efforts, we make tactical efforts to achieve constitutional objectives. So these are the things which should be borne in mind. Sometimes I get the idea that we have different religions, we have different sects, we have good motivational speakers, and everyone is trying to propagate their side, their version of religion or faith. I personally believe that when after independence we adopted the constitution, we the people adopted the constitution, and we feel that constitution is the national holy book. So all religion, all rituals, all practices should amend or correspond to the constitutional procedures of working. If we can think in those lines, as a police officer, I feel that many law and order problem comes
because of procedural problem, because of set standard of religious belief, because of set standard of doing certain work in a certain manner, in a certain route, in a certain area, like some yatra, some walk. So all these things, if they can be amended, if they can be changed, if they can be made flexible according to the requirements of the constitutional law of any area, any district, or any state, I think many law and order problems can be avoided. National or state resources can be saved by avoiding the unnecessary manpower and manforce. So, if we can think, if we can cultivate such idea in the people, in the head, religious head, so a good service to the nation can be done. One more idea which I also feel, that one of our friend, he is dealing with the Samvidhan Kavya, like they are trying to make people various article of the constitution in a poetic form, in a poetic form. Small videos are there. All things are, uh, you know, audible. We can just easily hear it and understand. So that is another way of spreading the message of the constitution. So that is also a good idea, and I think your foundation can adopt this thing. As in the initial program, we heard the preamble reading. It is very great thing, and it should be followed everywhere. I have been fortunate enough that I also participated. I ensured such preamble reading to one or two big gathering in Gujarat. So this should be done whenever it is possible. When, if we come to the topic, like since it is a one-sided uh, talk, I will take few features from my side only. When we say what are the salient features of the constitution, so I found three most important in this constitution, and they are fundamental rights, directive policy, and fundamental duties. I think they three are the interactive part of the constitution. They are the positive thing in which individuals and human can interact, can experiment, can see that whether fundamental rights are achieved the way constitution wanted, whether government is able to frame the policies which constitution wanted, and whether the citizen are responsible enough to perform their duties which are expected of them. I think these three are interconnected, and it place responsibility on the three stakeholders of the constitution: court, high court, supreme court will come into this, local public, local citizen will come into this, state government, central government, panchayat, municipalities, all local body, they can be tested in this way. Are they doing their fundamental duties? Are they doing
their police are they doing that thing. So that is the good thing I want to say about this. Another concept I am doing and I find applicable is that a concept is from beginning of the humanity to the constitution. From beginning to the constitution, all dispute end. What I can say, what I want to say, that we had all type of humanity, cultures, peoples. We had all type of areas, tribal areas, plain areas, areas near rivers. We had different cultures, castes. We had different sects. Something was good, something was bad, like untouchability was there, caste system, one system, it was there, though they are officially constitutionally banned, but still cases are being reported. So when the framers of constitution or when national leaders of the country got the independence, so they had the opportunity to frame the rule, frame the constitution. So at that time, it is believed, it is supposed, and it is on record that at that time, all of the issues were discussed, must have been discussed, and if anything was left, there is a provision of amendment in the constitution which has been amended many times. But once constitution is adopted or once amendment is adopted, it is the duty of all concerned, it is the duty of all concerned people, all concerned religions, all concerned cultures, all concerned sects, that they all should amend themselves, their system to the constitution. It is for them to change to constitution. It is not for constitution. It is for them. It is for us. We amend ourselves to the constitution, and in that sense and in that way, constitution is ideological religion. We can say, I propagate that I have two religion. One is my ideological religion, that is the constitutional religion. All have constitutional religion on top of it. After that, at personal level, as per Article 25 of the Constitution, we can follow any religion, any culture, any sect. So if these things are clear in the minds of the people, in the minds of the especially youth, in the mind of the child who are evolving, I think the problems of the disputes which arise, problems of the riots which arise, problem of the hatred which arise due to these things will end, should end. So our campaign of from beginning of mankind to Indian Constitution, the dispute ends, should be implemented, should be seen by all, so that we can respect all the religion, we can respect all people, and we can finally respect our national holy book, our Rashtra Granth, which is the Constitution. So these good things, good factors should be conveyed wherever it is possible. If after this, I also want to share few sections of the Constitution which are very important.
we say that directive principles, which I just spoke, are such principles that if government implement them completely, so many things will ease out. Even the problem of employment, problem of unrest, and many unexplained doubts can be cleared. I just give example. If we go say Article 38, so it clearly say that it will ensure to eliminate inequality in income, status, facilities, and opportunities. So government has many schemes. These schemes are being implemented by officers or politicians or ministers. We should see that they are implemented properly. We have Article 44 for Uniform Civil Code. We have Article 46 for promotion of SC, ST and weaker section. We have Article 48 and 48A regarding protection of agriculture, environment, forest, wildlife, cow, cattle. These are the very crucial, very touchy issues. But Constitution has given the provision that they should be protected. Then we have the Article 49, which says protection of monuments and place of national importance. We see there have been many claims and disputes about the various places, at various monuments, at various sites, about to whom it belongs. So, if we are protecting after independence, so we can maintain such important monuments which are legacy of our history. So these are the few articles. Then if we come to the fundamental duties under 51A, so they are also clearly mentioned that we should have 10 fundamental duties as per 51A, and number one is that we should follow Constitution, which I said. When we say that we should follow Constitution, so I am not saying it on my own, but it is our duty. We should maintain unity and integrity of India. We should preserve our composite culture. Now this is very important. Composite culture is very important. India is a diverse country. What I said that India from beginning of mankind to 1947 year we got independence. All type of people came into India, settled into India. They changed some religion, they changed some culture, everything happened. But once 47 came, whatever was there is our Indian citizen. So that composite culture should be maintained. We should protect our natural environment. Then we should have scientific temper, spirit of inquiry. So that is very important. I see, as I am seeing the portfolio of the women protection, women rights, I have seen at many places, especially in tribal areas and even in other areas, non-tribal areas, that where because of superstition, because of some bad practice, women are subjected to cruelty or even death just because they feel that this lady is responsible for some bad things happen or happening in the household or in the village or in this area. So that superstition, that presumption without inquiry, without scientific thing, are causing the atrocity to the woman.
So we need to have scientific temper. I am also associated with the one or two racialist societies which are working on this thing to expose, or rather to say things clearly, that what is happening is just a trick, is just a skill, and nothing very uncommon, and a person can achieve it. So that scientific temper need to be evolved in youth and ladies. Then we should have the safeguard public property and abjure violence. This, as a administration, we have seen many times: loss of property, loss of life, injuries. So they are the grave offences. Though Indian Penal Code has provision of punishment and even monetary recovery, but it is our duty. It is the duty of the person who involved. If we could have made them good citizen, so they could have avoided. Like I am also associated with the Scouts and Guide movements, Hindustan Scouts and Guide. So they are basically training the youth, rather children from say sixth standard up to 35 years of, to learn something about their personality, about their physical personality, about their mental capacity, about how they can be good citizen, how can be a good constitutional follower. That thing we impart them. So if they are the enlightened one of the constitution, I think they will not involve into these things. So these are very important thing for that. Then we should strive towards excellence in all spheres to take nation to high level. We say that India was Sone ki chidiya. Again, we are trying and we are vying for the Vishwa Guru. So how that will happen? This will happen when each of the citizen excel in his potential in whatever area he has, and that total of individuals, that is India, they can deliver the output in all field. Only then we can be a Vishwa Guru. So that is again mentioned in the constitution. So we can say that we can also achieve this thing by following the constitution. So I think with these few important sections, I feel if focus is there, we can achieve the things. One more thing I would like to say. I would like to mention that we have the national government, we have the state government, and we have the uh, local bodies, corporation, multiple corporation, big corporation. We have small corporation. We have villages, panchayat. So even they are very important. As Gandhiji had said, that if we show growth in village, if villages are self sustainable, if they are able to create the jobs, if they are able to create the satisfaction among the people, I think even that can be achieved. So panchayat or local bodies have very important role to achieve the happiness of the people. If we can provide them job, health, good culture, peaceful culture, so they will be happy. So
that village should be happy, so people will be happy, and ultimately it will lead to what Constitution wants: peace and compassion. So here, even the role of Buddhism will come, which teaches compassion, which teaches harmony, and which teaches that we should follow the Panchsheel, we should follow the Eight Noble Path, and if we follow them, I think we will not have problem, and we can see all the things clearly. So my idea will be that right from the national level to the panchayat level, if we can achieve the objectives, like if we see the panchayat has many important work for them, like they maintain the road, they maintain the population register, they maintain the education, primary schools, they maintain the health, they maintain the graveyard and all that thing. So all that thing, if they can be achieved, so really India can be a very strong nation, and they can be visual. So I think with these few words, I feel that constitutional awareness in society from all areas, from northeast areas to Kashmir area to down south Kanyakumari and Tamil Nadu, everywhere where we have different language, where we have different cultures, but constitutional is same. Constitution is said to be rigid but flexible. It is rigid. Its basic structure is rigid. You can't, no one can change the basic structure. But many things are flexible, which can be changed according to the need, according to time. So I think we have a very beautiful constitution. It is a real a Rashtragram, and government of India officially wants that it should be implemented, it should be propagated. So it is our duty, especially of all the NGO and especially your foundation, our few NGO in which I am associated, that we should, wherever, whenever we get the opportunity, we should make people understand the importance of the Constitution. I think from my side, this is the all I want to say. If any query or any questions are there, you all are welcome. Thank you very much. Thank you. माइक बंद है. सॉरी थैंक यू वेरी मच सर. आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज के टॉपिक के बारे में विश्लेषण किया है. You have given many ideas in order to propagate constitution and its awareness, like having constitution friends from various state of society, and also Samvidhan Kavya, which can help us in making awareness about the constitution. Izet sir will brief you about our Samvidhan Mitra initiative under Samvidhan Foundation. So you have also mentioned about fundamental duties which everyone needs to perform as per the constitution. As you rightly said, proper implementation of directive principles would really make a difference. You have quoted various important articles from the constitution, like Article 26, Article 51A, Article 48, 49. You have also mentioned that it is our everyone's duty, from individuals to corporations to local bodies like panchayats to government on a national level. If everyone would follow the institution in a right spirit, will definitely will make India as a great nation. Sir, thank you again. It was our pleasure to have you today. Thank you for sharing your thoughts on today's topic in Samvidhan Ki Pathshala.
अब मैं संविधान फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री इजत खोब्रागडे सर से कार्यक्रम के समापन भाग में कुछ शब्द कहने का अनुरोध करूंगी। सर अनिल प्रथम सर का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही सादे सरल शब्दों में आपने संविधान को बताया है, उसके जो बेसिक फीचर्स है, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, और वो सारे लोगों तक पहुंचाने का जो काम है वो कुछ एनजीओ लेके सरकार की ओर से भी हो रहा है। और ये बात सही है कि अगर ये देश का संविधान है तो ये देश के नागरिक को मालूम होना चाहिए। और वो कैंपेन उसी तरह से चलना चाहिए, स्लो बट स्टेडी चलना चाहिए। लोग समझ ले कि ये हमारे देश का संविधान है, ये हमारा संविधान है, हमारे लिए है। उसका जो उसको अपनाने का जो काम है वो एक संविधान के प्रबोधन से, संविधान की जागृति के विविध कार्यक्रमों के माध्यम से हो सकता है। सर आपने बड़ा अच्छा यू सजेस्टेड अबाउट दिस फ्रेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई मस्ट टेल यू, हमने एक साल पहले ही संविधान मित्र इस नाम से हमने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और हम लोगों को अपील कर रहे हैं कि जो भी लोग संविधान कैंपेन को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, हम सारे लोग, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर भी बहुत सारे लोग अभी संविधान के बारे में उनका बोलना है, उनके कार्यक्रम है, लोगों तक पहुंचाने का है, समझने का है, ये काम कर रहे हैं। ये हमने भी शुरू किया है और उसको काफ़ी रिस्पांस मिल रहा। तो हम इसके साथ भी एक दूसरा भी एक काम करते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की जो आर्टिकल 46 जो आपने अभी रेफर किया, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए नॉवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फंडामेंटल राइट को भी हम अगर साबुत करना है तो हमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के जो है उसको अपनाना पड़ेगा, और उसकी जिम्मेदारी सरकार पे है, यंत्रणा पे है। तो उसमें जो प्रोग्राम आते हैं बेसिकली एजुकेशन के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप का विषय है, या फिर लैंडलेस को जमीन देने का है, जो होमलेस है उनको जमीन देने का, घर देने का विषय है, एट्रोसिटी एक्ट है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, बस्ती जो है बैकवर्ड क्लास की उसमें सुविधा देना है। तो ये सारे विषयों का हम भी सरकार के साथ में इंटरवेंशन करते, जो यंत्रणा हमारा जो प्रशासकीय अनुभव भी रहा है वो अनुभव को लेके कुछ सजेशन बात करना और फॉलो अप करना। अभी महाराष्ट्र सरकार ने अभी जो, जैसे कि पहले हमें दलित बस्ती कहा जाता था, यूपी में अंबेडकर ग्राम के नाम से स्कीम, आपके गुजरात में भी होगा, हर राज्य में है। तो महाराष्ट्र सरकार ने उसमें हमने सजेस्ट किया था उनको कि ये समाज मंदिर के बजाय एक संविधान सभागृह को बनाया जाए और उसमें संविधान की प्रास्ताविका का भी स्तंभ किया जाए, और साथ ही में जो गांव के बच्चे चाहे किसी भी जाति धर्म के हो उसमें इकट्ठा आके पढ़ने का, उसके लिए लाइब्रेरी, इस तरह से अभ्यासिका। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये उसको एक जीआर निकाला अभी 6 अक्टूबर को, और पूरे जो बस्ती है अनुसूचित जाति नवबौद्ध की बस्ती है, तो वो गांव में ये प्रोग्राम अभी इस साल से चलने वाला है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सर। अभी बाबा साहब ने भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इटसेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी को जो स्वतंत्र समता बंधुता न्याय के साथ में समझ लेते हैं तो हमारा सबका, आपने बिल्कुल सही संदेश दिया है। अभी 26 नवंबर आने वाला है संविधान दिन। अभी पिछले कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन कुछ भी निर्बंध के साथ में उसको करना पड़ेगा, वो जागृति का अभियान है। और हमने हमारे महाराष्ट्र सरकार को भी हमने संविधान फाउंडेशन की ओर से रिक्वेस्ट की है कि हम आज़ादी का जो अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे, साल भर कर रहे, तो ये उसमें संविधान जागृति का भी एक विषय उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रमों में इंक्लूड करना चाहिए। समाज के तौर पर, समाज के लेवल पे तो बहुत बड़े पैमाने पे अभी शुरू हुआ है, पर लेकिन सरकार अगर रिसोर्सफुल है, मैन पावर है, सब कुछ है, अगर भारत सरकार और राज्य सरकारें करे तो मुझे लगता है कि ये विषय गांव तक, लोगों तक, घर घर तक
पहुंचा जा सकता है अगर हम समझ ले कि हमारा ये अधिकार भी है, हमारा ये कर्तव्य भी है और हमारे सामाजिक आर्थिक विकास का ये हमारा कार्यक्रम है। हमारा एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए हमने इसको अपनाना है और जो गलत हो रहा उसके खिलाफ सवाल उठाना है, सवाल पूछना है। संविधान ये ताकत देती है और यही उद्देश्य को लेके हम संविधान फाउंडेशन की ओर से स्लो एंड स्टेडी छोटा मोटा हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों तक ये पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने संविधान साहित्य सम्मेलन करा था 2 दिन का, आप वहाँ अहमदाबाद से ऑल द वे यू हैड कम ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम। तो मुझे लगता है कि एक एनजीओ के लेवल के समाज के लेवल पे हर जिले में स्टेट में उसको कॉन्फ्रेंस हम कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। मुझे पर्सनली जो मेरा आईएएस का अनुभव रहा है स्टेट गवर्नमेंट में, बहुत ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, मतलब मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, वो दे हैव उनका ये कहना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम संविधान पढ़ के क्या करेंगे। मुझे लगता है कि उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। अगर जिले का कलेक्टर अगर सेंसिटाइज हो जाए तो मुझे लगता है कि या जिला शिव हो या पुलिस डिपार्टमेंट के एसपी हो या कमिश्नर हो, डिविजनल कमिश्नर, अगर वो करे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम। अब मैं भी प्रशासन में रहा, हमने रहते हुए भी ये स्कूलों से उसको शुरू किया, तो इट इज़ पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। बहुत टाइम और ये टाइम वेस्ट का जो कंसेप्ट कुछ लोगों को लगता है, आई थिंक दे हैव ए मिसनॉमर, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर हम संविधान को ही नहीं उसके बेसिक वैल्यू को समझेंगे तो जो हमारा गुड गवर्नेंस करने की जो हमारी एक सरकार की एक ध्येय है कि हम गुड गवर्नेंस करेंगे, मतलब लोगों की भलाई के लाभ करेंगे, जो वेलफेयर ऑफ द स्टेट का कंसेप्ट इस संविधान में है। तो मुझे लगता है प्रशासन के लोग और उच्च स्तर के जो अधिकारी है इस पे ध्यान दें। हम महाराष्ट्र में संविधान फाउंडेशन की ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी है या हमारे चीफ सेक्रेटरी है, उनको हम लिखते रहते हैं कि ये करना चाहिए। कुछ होता है, होगा आगे चल के, बात करती रहनी चाहिए। जो अभी इतने सालों तक नहीं हुआ, अभी उसकी संविधान की जागृति का अभियान सरकार के ओर से शुरू हुआ। ये बहुत अच्छी मुझे लगता है कि इट्स वेरी हिस्टोरिकल डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जी का रहा 2015 में, जबकि बाबा साहब की 125वीं जयंती सेलिब्रेट की पूरे देश में। तो जब ये कैंपेन शुरू हुआ तो कैंपेन का जो हम ये कहेंगे कि उसमें क्या पाया आज तक, हमने वो शुरू करके कहाँ तक गया है, ये भी जिम्मेदारी मुझे लगता है प्रशासन में। मैं अभी हिमाचल प्रदेश गया था, तो एक नाको करके गांव है, तो मैं उस गांव में भी गया था, होम स्टे में थे हम लोग। तो हम एक स्कूल के पास गए थे, तो स्कूल में वंदे मातरम लिखा है और राष्ट्रगीत लिखा है, लेकिन संविधान का प्रियम्बल वहाँ नहीं लिखा था। तो अब भारत सरकार ने 2015 में ये आदेश निकाला है पूरे देश के लिए, सारे राज्यों के लिए, कि स्कूलों में प्रियम्बल को डिस्प्ले किया जाए, लिखा जाए, दीवारों पे लिखा डिस्प्ले करे और उसे पढ़ा जाए और संविधान दिन भी सेलिब्रेट किया जाए। सेलिब्रेट करने से उसमें चर्चा होती है, बहुत सारे पहलू है समझ में आते हैं और छोटे छोटा उसका लिटरेचर भी उसमें निर्माण हो सकता है उसका। तो हमने प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी की लिखी है कि इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अभी हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और बोलना है। ये संविधान को अगर आगे ले जाना है, उसके पहलू को आगे ले जाना, उसके वैल्यूज को अगर इम्बाइब करना है लोगों में, तो मुझे लगता है कि प्रशासन में उसको बहुत ज़्यादा मतलब गति से उसको करना पड़ेगा, एक टॉप लेवल से, क्योंकि दैट विल परकोलेट टू द डाउन लेवल। अगर टॉप से आता है, अगर राज्य के चीफ सेक्रेटरी को लगता है कि नहीं दिस इज ए प्रोग्राम फॉर द गुड गवर्नेंस और सेंसिटाइजेशन ऑफ द ऑफिसर्स और डिलीवरी सिस्टम को इफेक्टिव करने का, इसको इस साथ जोड़ा जाता है। जो स्कीम्स है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करने का है, कि उसको करप्शन को रोकने का है, उसको एक्सप्लॉयटेशन को रोकने का है, डिले रोकने का है, जो हम प्रशासन में हमेशा उसको ट्रांसपेरेंसी प्रशासन में लाने का, कि ये जो सारी बातें हम करते हैं, तो मुझे लगता है कि संविधान यही कहता है कि ये
लोगों की भलाई के लिए है, सबकी भलाई के लिए, तो इसको अच्छी तरीके से उसको लागू करो। और बाबा साहब ने यही कहा था, ये देश का संविधान ये को सबका करके, आपने सही कहा सर, ये राष्ट्र ग्रंथ है। और ये किसी भी धर्म के लोग हो, वो सारे धर्मों का अगर कोई एक ग्रंथ है तो वो देश का संविधान है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं, आप अपने लेवल से कोशिश करते हैं, कभी तो एक नेशनल लेवल का एक संविधान पे एक कॉन्फ्रेंस प्रियम्बल पे भी किया जा सकता है, 1 दिन का या 2 दिन का। मुझे लगता है बहुत जरूरी है ये करना आज के माहौल में भी। उसको आई थिंक इट हैज बिकम द necessity of today to propagate very effectively the constitutional philosophy and principle of the constitution among the people. It reaches to the every home of the citizen. तो इसी इसी हेतु से हमारा ये कार्यक्रम चलता रहता। आप यहाँ अपना बहुत अमूल्य वक्त, हम आई नो you being the police officer of the highest rank of the state, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आपने हमें हमारे लिए 1 घंटे का टाइम निकाला और बहुत अच्छी तरीके से संविधान के पहलू पे आपने प्रकाश डाला। मैं संविधान फाउंडेशन की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एफबी लाइव में जो भी लोग देख रहे हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और उन्हें मैं अपील करता हूँ कि आने वाले 26 नवंबर को संविधान दिन के उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम किया जाए। और हर महीने में, क्योंकि संविधान तो रोज का ही काम का है, तो सिर्फ 1 दिन साल में करने से नहीं चलेगा। तो वो कंटिन्यूसली कभी ना कभी हर विषय को लेके, अलग अलग विषय को लेके उसको बोलते रहना चाहिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म में बोलते रहना चाहिए। अलग अलग तबके के, रिलीजन के, जात धर्म के लोग, क्योंकि संविधान ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता, ये सबको लेके हमें चलना है। और जो जैसे कि कहा कि अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो एक आत्मसम्मान का देश, जो कि संविधान नीतिमत्ता का देश बनेगा, जो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का देश बनेगा, तभी मुझे लगता है कि हम एक विश्व में एक शक्तिशाली और प्रोग्रेसिव समता न्याय का देश बना पाएंगे। इस पहल में आपका हमें हमेशा मार्गदर्शन और सपोर्ट, वी गेट ए मॉरल सपोर्ट फ्रॉम यू, सो आई थैंक यू very much, or we will be together in the coming all our endeavors in the propagation of the constitution. तो सर मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मिलते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you. It was very nice program, and I really enjoyed. Enjoyed it. Thank you very much. Thank you sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। संविधान से जुड़े अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए संविधान फाउंडेशन द्वारा संचालित संविधान की पाठशाला में मिलते हैं अगले हफ्ते शनिवार 20 नवंबर को। जय भीम।